F9 Pavlon company, calculate the actual / predicted dividend payout ratio for each year, and comment upon the nature of the company's dividend policy prior to listing. Discuss whether such a policy is likely to be suitable for a company listed on the stock exchange. Pavlon Incorporation has recently obtained a listing on the stock exchange. 90% of the company's shares were previously owned by the members of one family, but since listing, approximately 60% of the issued shares have been owned by other investors. Pavlon's earnings and dividends for the 5 years prior to the listing are detailed below. Okay. The number of issued ordinary shares was increased by 25% 3 years ago and by 50% at the time of the listing. The company's authorized capital is currently 2 crore 50 lakhs in 25 cents ordinary shares, of which 4 crore shares have been issued, and the market value of the company's equity is 7 crore 80 lakhs. Okay. The board of directors is discussing future dividend policy. And interim dividend of 3.6 cents has per share was paid immediately prior to listing, and the finance director has suggested a final dividend of 2.34 cents per share. The company's declared objective is to maximize shareholder wealth. Dividend payout ratio निकालना is dividend upon EPS. EPS upon EPS. Profit after tax, EPS. Dividend payout ratio. And 60. Dividend payout ratio is DPS upon number of shares, na? या DPS upon EPS? DPS upon EPS, na? Dividend payout ratio. And DPS upon number of shares is dividend per share. नहीं. Total dividend upon number of shares will become DPS, right? पीएम का क्लास पता है क्या स्टार्ट कब से हो रहा है वो? पता नहीं, अभी तो कुछ बोला तो नहीं है. संडे. ये संडे से चालू हो रहा है? इनका हाँ. दिमाग खराब हो गया क्या? इधर पेपर खत्म हुआ नहीं यार. मतलब राहुल को कॉल आया था, क्योंकि एक्चुअली सभी को कॉल आया था कि पेपर कौन सा दे रहे हो ये वो. बट राहुल ने पूछ लिया कि क्लास कब से है, तो या मैं तो नहीं होंगी भाई ये संडे को.
होपफुली ना हो। Okay, so dividend payout ratio is 42.67%, लेकिन लास्ट में उसका 40% हो रहा है। The number of issued ordinary shares increased to 25% 3 years ago. 3 years ago की बात है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। At the time 50% of the listing, the company's ये वाला 50% का नहीं ये, the company's authorized share capital is currently वो है तो of which 4 CR shares have been issued, ये वाले 4 CR. The market value of the company's equity is 78. आ अभी गया ना? आज मैं अभी कल है गैस का सब ईयर्स का 42% आ रहा है, राइट? यस, और लास्ट ईयर का खाली 40%। अपन जो डीपीएस है इसमें फाइनल डिविडेंड भी ऐड करेंगे ना, जो उसने एस्टिमेट किया है 2.34 सेंट्स, यस यस यस, बिकॉज अपन ये एक सिर्फ इंटरम किया है। अपन खाली एक एस्टिमेट लगा रहे होंगे ना, एक्चुअल स्लैश हम्म प्रिडिक्टेड ऐसा हम्म वो है। हम्म। ठीक है, फिर डिस्कस भी करना है तो एक है कि फिक्स्ड पे आउट रेशियो वो लोग परसेंटेज रख के चल रहे हैं और उस हिसाब से डिविडेंड दे रहे हैं। हम्म। सो द डीपीएस फिगर विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अगर प्रॉफिट नीचे भी जाएगा तो भी ये लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो उतना ही देंगे। दे हैव जस्ट ऑब्टेन्ड बिकॉज लिस्ट। हाँ, बिकॉज इनका फिक्स डिविडेंड पॉलिसी है, एंड दे आर ऑब्टेनिंग, दे हैव ऑब्टेन्ड अ लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सो इट इज गुड बिकॉज द शेयर होल्डर्स, it will be attractive for the shareholders if they see that they are going to receive a constant return on their investment. राइट, और इनका तो ऑब्जेक्टिव भी वही है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। Shareholders wealth. बट अगर सपोज इनका इन फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है और फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो है, सो इनको प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज इवन इफ दे डू नॉट हैव इनफ कैश, स्टिल दे विल हैव टू कंटिन्यू टू पे आउट द dividends to the shareholders, because if they cut out the dividends, then it will send a bad signal to the shareholders. बराबर। आई ठीक थिंक है, 5 मार्क्स के लिए इतना काफी है। हाँ क्योंकि हमने कैलकुलेट भी तो किया है। हम्म। फिर क्या बोला है? Discuss पूछा whether ना, the proposed is likely to be an appropriate of dividend if the majority shareholders are owned by wealthy private individuals, and if majority shareholders are owned by institutional investors such as pension funds. पहले पढ़ तो लेते हैं पैवलॉन का उन्होंने कैसा दिया है। हम्म। Pavlon appears to be adopting a policy of fixed payout ratio, which is for 42.7 per annum over a period of 5 years. In general, such a policy can lead to wide variations in dividend per share. In Pavlon's case, over the last 5 years, earnings have been rising, although the fluctuating levels, leading to dividend also growing, but at an inconsistent rate. If it is believed that the share price is affected by dividend policy, then these fluctuations in dividend and decline in growth could depress the equity value. Most listed companies attempt to adopt a stable or rising level of dividend per share, even in
the face of fluctuating earnings. This approach is taken in order to maintain investor confidence. If Pavlon were to continue with its present policy and earnings were to decline, the 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 resultant fall in dividend could have serious repercussions for the share price. यहाँ पे ग्रोथ भी निकाली है, मैंने शायद ग्रोथ नहीं निकाली, यहाँ पे ग्रोथ निकाल लो। ट्वेंटी एट सिक्स एट, हाँ ठीक है, लास्ट में वो चीज नेगेटिव में जाती है। नेगेटिव डीपीएस एंड नेगेटिव ईपीएस की भी उन्होंने ग्रोथ निकाली है। ठीक है, ईपीएस की ग्रोथ इनकंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन विद डीपीएस। दोनों का ही आई थिंक, क्या दोनों का ही ग्रोथ काफी सिमिलर है ना। ग्रोथ पहले 4 सालों के लिए सेम है, बट लास्ट ईयर में नेगेटिव 23 और नेगेटिव 17.6 जा रही है ना, हम्म कि अपन ने 40% दिया है डिविडेंड, हम्म इसीलिए। कोई बात नहीं, ठीक है, इतना कर दिया, आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे, बड़े आगे। हम्म Discuss whether the proposed final dividend of 2.4 cents is likely to be an appropriate dividend if the majority of shares are owned by wealthy private individuals and if the majority of shares are owned by institutional investors such as pension funds. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का तो ठीक है कि they need cash or they need money to finance their day-to-day operations or daily expenses. So a shortfall in dividend won't bother much to them. Wealthy private individuals के लिए बड़ी बात हो जाएगी ना। हम्म but won't private individuals want more of capital gain rather than dividend? Maybe कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, कंपनी ने तो हम्म फुलफिल नहीं किया है वो ऑब्जेक्टिव भी। हाँ राइट, दे आर ऑलरेडी वेल्दी, दे वुड लुक, तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि द वेल्दी, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल्स whether they follow the dividend irrelevance theory or whether they follow the कौन सी theory है फिर वो, relevance theory। वो तो कंपनी फॉलो करती है ना। ओ वो थ्योरी सब कंपनी के पर्सपेक्टिव से है। ओके, मतलब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी है कि इंडिविजुअल बोलेगा कि नहीं मेरा पैसा डाल दो इन द कंपनीज हम्म ग्रोथ, ऐसा, बट ठीक है। हम्म, देख लेते पढ़ लेते एक बार। ठीक है, the proposed final dividend of for 2011 gives the total
for the year of 5.5 cents. This is a significant fall in the dividend per share and a small decline in the dividend payout ratio in the absence of market imperfections such as taxation and transaction cost. It could be argued that dividend policy has no impact on shareholder wealth. It is the firm's future earning streams that is of importance, not the way in which it is split between dividend and retentions. However, one market once market imperfections are introduced, dividend policy can be shown to have a great an impact on investor wealth. Okay, depending on the tax regime they inhabit and their own personal needs, private individuals may pay income tax at a higher rate than capital gains tax due to available CGT annual exemptions. They may therefore prefer retentions to distributions and would not be disappointed with a cut in dividends. However, they may prefer income to capital gains, meaning that they would not find a dividend cut acceptable. In theory, any income they require could be generated by selling shares to manufacture homemade dividends. Note, however, the market imperfection of transaction costs that would be incurred when selling shares. ये काफी सही आंसर है. If the majority of shares are owned by wealthy private individuals, then it may be possible for the company to explain the background of any reduction in the dividend payout to gain acceptance from the shareholders and reduce any negative consequences of the cut. The tax position of the institutional shareholders varies and therefore will their attitude to dividend policy. Most, however, require a steady flow of income to meet their day-to-day obligations such as pension, insurance claims, and may not wish or be able to generate homemade dividends. It could be argued the new investors have bought shares in Pavlon with full knowledge of its dividend policy and should therefore not be surprised if it sticks to the policy of 40% payout. However, many shareholders might expect it to change its policy now that it has obtained listing. A further factor to consider in the informational content of dividends, the proposed dividend cut might be seen as a signal of poor earnings in the future and lead to investors or of either group selling shares. Overall, there is no conclusive evidence on what makes an optimal dividend policy. Pavlon should, however, consider the tax position of its investors and potential reaction of the market to a cut in dividend. पूरा पार्ट काफी अच्छा था. तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो होममेड डिविडेंड नहीं जनरेट कर सकते तो वो नाखुश होंगे. और यहाँ पे wealthy private individuals they can generate homemade dividend by selling shares, so it won't bother to them that much. They can do it, but जैसे इन लोग ने बोला कि उनके लिए कैपिटल गेन का टैक्स भरना इज अ चीपर ऑप्शन. इनको डिविडेंड जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उनको डिविडेंड से लेना देना ही नहीं है, बिकॉज दे वांट कैपिटल गेन इन शेयर्स. वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग अपनी डेली नीड्स के लिए नहीं करते. So they would not want dividends because they are already making money. This is just extra income for them. तो वो लोग वेट करेंगे कि they invest in project positive NPV projects, market share बढ़े, share price बढ़े, तो जो उनको शेयर का कैपिटल गेन है वो ज्यादा मिले. So that is what they want. Private individuals, private investors. Right, समझा. सही है. काफी अच्छा आंसर. अभी ये क्वेश्चन नंबर B. By the end of 2011, the company is forecasting profit after tax to grow by 15% per year for the next 3 years, 2012, 13, and 14, and by 8% per year after that. Pavlon's cost of equity capital is estimated to be 12%. Dividend may be assumed to grow at the same rate as profits. Assume that the 2011 total dividend ended up as
7.12 cents, and all dividends will be paid at the end of the financial year. Okay. हमें use the dividend valuation model to give calculations to indicate whether Pavlon shares are currently under or overvalued. Okay. तो ये सम आता है पूरा? थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है। Yes, we can buy you the dividend and valuation model. तो जहां तक मुझे लगता है, हाँ, हम इस केस में डायरेक्टली डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नहीं यूज कर सकते। Here, dividend to growth and 1 by revised dividend रिवाइज डिविडेंड इतना हो गया ग्रोथ के बाद। अच्छा रहता है, तो इस चीज को हम लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स पे। प्रेजेंट वैल्यू फॉर 2000 for 2012, which is next year, would be 0.893। फिर यहाँ पे आएगा 2013 के लिए 0.797, फिर यहाँ पे आएगा 0.712। Valuation for each year. Valuation for each year will be this much. Sum dollars, मतलब cents नहीं हुआ actually, which is 22.526 times. Yeah, maybe after 2014 dividend valuation would be KE is equal to P0 into 1 plus G upon PO plus G. PO G के लिए आफ्टर दिस ईयर हमारा 8% बनता है, सो 8%। तो 12% पे है ही। इक्वल टू D0 प्लस G ऑन PO प्लस G, तो PO इज इक्वल टू P1 ऑन K माइनस G। P1 is equal to
PO is equal to divide by bracket open P minus G, अभी ये वैल्यूएशन POP इसको भी प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स पे लेके आना पड़ेगा 0.712 ओके ये वैल्यूएशन आफ्टर 2014 does valuation 2012 से 2014 तक की कितनी सम would be 2.360 या फिर make a sense. Two three zero 600 231 230,698. That's okay. The current market value of Pavlon shares is 1.95 per share appears to be undervalued. मैं ऐसे निकाला है कि undervalue or overvalue. So for that reason, current market value equal to 78 is the market value upon the number of shares, which gives us $1.95. So therefore, इतना अगर 1.95 up भी है 2.360 हो गया है, so this is undervalued. इसका actual valuation 230,69862 होना चाहिए था. ठीक है.